एवरीवन, आई एम अनुसरा फ्रॉम लेक्सिकन इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर। मुझे पता है एसएसटी का नाम सुनते ही सबके चेहरों पे एक की हंसी गायब हो जाती है बिकॉज एसएसटी इज़ अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट। बट टुडे आई विल टीच यू एसएसटी ऐसे कि लाइक अगली बार जब आप एसएसटी पढ़ने बैठे तो आपका इंटरेस्ट अपने आप आने लगे। तो आज मैंने सेलेक्ट किया है क्लास 8 का टॉपिक एग्रीकल्चर। तो स्टूडेंट्स प्लीज ओपन योर बुक, योर एनसीईआरटी बुक, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। So we all know agriculture is a very familiar word for all of us. We all know what is agriculture. Just I am explaining. Agriculture is means cultivation of crops. It is made from two words, agri plus culture. Okay, it is a Latin word. The meaning of agri is soil. Okay, so it means the cultivation in soil is called agriculture. In India you will find most of the people are dependent on agriculture only. Like if we calculate the percentage, the 50% of Indian population are dependent on agriculture only. It means we can say हमारे इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हाथ है. So we can say agriculture is an economic activity also. So now what is economic activity? So the complete activities which helps in the economy of the country are called economic activity. So economic activities are divided into three types. First one is the primary activities, second one is the secondary activities, and the third one is the tertiary activities. Okay, what is primary activity? Like extraction of or production of the natural resources. Now the question is, what is natural resources? The resources which are present in the nature are called natural resources. So agriculture is one of the primary activity where we are producing crops. Clear? Mining is also a natural primary activity because here we are extracting minerals from the earth core. Clear? The second one is the secondary activity where we process the product which we get from the primary activity. Like अगर हम देखें कि हमको प्राइमरी एक्टिविटी से हम लोगों ने कॉटन प्रोडक्शन किया. ओके, कॉटन का प्रोडक्शन किया. अब कॉटन को हम डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते, उसको हमको प्रोसेस करना पड़ेगा. तो इन सेकेंडरी एक्टिविटी वी प्रोसेस दैट मटेरियल इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यू कैन से. Now the third is the tertiary activity. What is tertiary activity? We support these two activities like banking, finance companies, marketing companies. आपने कपड़े बना लिए क्या, बट आप उसको सेल कैसे करेंगे? You need a marketing team, you need a market. So that comes under the tertiary activity. This is all about the three economic activities. But this chapter is all about the agriculture. So हम बाकी के ब्रीफ में नहीं जाएंगे, हम पढ़ेंगे आज एग्रीकल्चर. सो अब क्वेश्चन है, क्या आप एग्रीकल्चर कहीं भी कर सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. यू नीड अ लैंड. एंड कैसा लैंड? विच इज सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर. क्लियर? सो द लैंड विच इज सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर इज कॉल्ड एरेबल लैंड. Just note down or underline in your book, the arable land is the land which is suitable for the cultivation of crops. Not only you need land, you need some physical inputs also, like you need sunshine, you need rainfall, you need topography. What is the topography? Like physical feature of the land. Like कई जगह आप देखेंगे बहुत plain area होता है, कुछ एरिया स्लोपी होते हैं, कुछ माउंटेन रीजन्स होते हैं. तो यू नीड अ सुटेबल टोपोग्राफी फॉर स्पेसिफिक क्रॉप्स. ओके, नाउ यू कैन सी इन द मैप ऑफ 4.1 दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड. तो इन इंडिया यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द लैंड इज एरेबल हियर. क्लियर? इट मीन्स हमारे इंडिया में जितने मैक्सिमम लैंड में आप कल्टिवेशन कर सकते हैं. ओके, हियर आर द सम वर्ड्स लाइक जो कल्चर से बने हुए हैं, लाइक एग्रीकल्चर वेयर यू आर डूइंग कल्टिवेशन, द सेरिकल्चर विच यू आर कल्टिवेटिंग सिल्क वॉर्म्स, द पिसिकल्चर वेयर यू आर कल्टिवेटिंग फिश, द
viticulture where you are cultivating grapes, okay, and the horticulture. The horticulture is also a type of agriculture, but here we are doing cultivation for the commercial purpose, okay. Everything needs a system. Similarly, our agriculture need also a system that we call the farm system, okay. Now what is farm system? For complete agriculture you need some features like some inputs like storage device, like labors, you need labor, you need big machineries for irrigation, plugging and also for the pumping and all. Then you need some chemicals, fertilizers. You also need some physical inputs like sunshine, rainfall, temperature. तो this all मिलके ही सारे मिलके ही बनाते हैं एक farm system, okay. Now some process are there in the agriculture. The first process is the plowing, the second process is the sowing, the third process is the spraying, or the you can say irrigation also, the fourth is the weeding, the fifth is the harvesting. So now what is the weeding? The all other terms I think familiar to you, but what is weeding? The unwanted crops को जो हम remove करते हैं, that is called weeding, okay. So this is complete farm system. Now we'll read what are the types of farming. So according to the labor, according to the technology, according to the land, the complete farming system or the agriculture is divided into two. One is the subsistence farming and the second one is the commercial farming. So the word commercial, we all know something which we do for the selling purpose is the commercial. Now what is subsistence? Just opposite to the commercial. आप commercial में farming कर रहे हैं सेल करने के लिए, तो हम सबसिस्टेंस में फार्मिंग करते हैं फॉर आवर ओन यूज, क्लियर. सो सबसिस्टेंस फार्मिंग इज डिवाइडेड इनटू इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस. देयर आर टू टाइप्स, वन इज इंटेंसिव एंड द सेकेंड वन इज द प्रिमिटिव, ओके. सो फर्स्ट इज द इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. अब इसमें क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं छोटे छोटे फार्मर्स, उनके पास छोटे लैंड होते हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि दे अफोर्ड द हाई टेक्नोलॉजी एंड ऑल, दे कैन नॉट बाय फर्टिलाइजर्स एंड ऑल. तो वो क्या करते हैं, छोटे से लैंड में अपने खुद के सेल्फ यूज़ के लिए वो कल्टीवेशन करते हैं. दैट टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. तो अब इसमें क्या आप पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं? द फार्मिंग इन विच द फार्मर्स कल्टिवेट्स इन अ स्मॉल प्लॉट यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मेथड्स, क्लियर. सो इसमें क्या होता है, फार्मर्स एक ही लैंड में कई टाइप के क्रॉप्स प्रोडक्शन करता है जो उसको खुद के लिए यूज़ करने हैं, क्लियर. तो इस टाइप की फार्मिंग जनरली होती है इन द हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ में, जहाँ पे लोग मेनली अपने लिए ही फार्मिंग करते हैं, ओके. द सेकेंड टाइप इज़ द primitive subsistence. This type of farming is again divided into two types. One is the shifting cultivation and the second one is the nomadic herding. तो what is shifting cultivation? आपने पढ़ा होगा जब हमारा ह्यूमन का स्टार्ट हुआ था, ह्यूमन जनरेशन, तो लोग आदिवासी होते थे, वो जंगल में ट्राइबल्स लोग इधर से उधर घूमते रहते थे, कहीं एक जगह सेटल नहीं होते थे, क्लियर. तो उस टाइम वो करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन. इस टाइप के कल्टीवेशन में क्या होता है, वो एक एरिया पे कल्टीवेशन करते हैं. कैसे करते हैं, लाइक वहाँ जितने फॉरेस्ट को वो कन्वर्ट करते हैं पहले एरेबल लैंड में. कैसे करते हैं, बाय कटिंग ट्रीज एंड बर्निंग द ट्रीज. तो उसके जो एशेस निकलते हैं ट्रीज के, वो आपके सॉइल में मिक्स हो जाते हैं एंड दैट मेक्स द लैंड फर्टाइल. तो उस लैंड में वो कल्टीवेशन करते हैं. आफ्टर कल्टीवेशन दे जस्ट leave that land and they just move to another place. So they are shifting from one place to another place. That's why this cultivation is known as shifting cultivation. There are other names also, shifting cultivation like jhum cultivation in northeast India, milpa, roka. These all are the other name of shifting cultivation, okay. The second is the nomadic herding. So the nomad, what is nomad? The people who don't settle in one place,
Those who move from one place to another place are called nomads. So here is the nomadic herding. What is nomadic herding? इसमें क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो अपने जो कैटल्स होते हैं, लाइक कैटल मीन्स लाइक शेप्स, बफेलो, काऊ, तो उनको वो एक जगह से दूसरी जगह फॉर द हर्डिंग, वो रियरिंग ऑफ द कैटल्स, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ताकि उनके फॉडर का अरेंजमेंट कर सकें. तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड नोमैडिक हर्डिंग. ओके, now the second type of the farming is the commercial farming. As I already said, commercial means something which we do for the selling purpose. तो अब आपको सपोज आपकी एक छोटी सी घर पे बेकरी है, या यू लाइक टू मेक केक्स, ठीक है, तो आप घर पे खुद के लिए जब बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक छोटे से जगह पे और सिंपल घर पे जो आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है उसी से आप बनाएंगे विथ यूजिंग सिंपल टूल्स. बट इफ़ यू वांट टू सेल दैट केक्स इन द मार्केट, तो आपको क्या चाहिए, यू नीड good qualities of machineries, good quality of product, the big area and all. Similarly, in the commercial farming, the farming we are doing for the selling purpose. So we need a big land, big machineries with good fertilizers so that we can get good output also. Clear? So the commercial farming is divided into three types. The first one is the commercial grain farming. Second one is the mixed farming, and the third one is the plantation agriculture. Okay, so the first type of commercial farming is the commercial grain farming. The grain word is here, it means we are doing farming of grains like rice, wheat, barley, maize. This all we grow in the commercial grain farming. Okay, now the second one is the mixed farming. Mixed means here we are cultivating grains as well as we are rearing of animals. What is rearing of animals? Means जानवरों को पालना. Like cattles को हम generally लोग पालते हैं for their dairy products and meat and also. Clear? The third type of the farming is the plantation. What is plantation? This is the type of commercial farming where the single crop like tea, coffee, sugar cane, cashew, rubber, banana are grown. This type of farming is known as plantation. तो अब आपको क्वेश्चन है कि इसमें लर्न क्या करना है. आपको लर्न करना है कि फर्स्ट द डेफिनेशन, व्हाट इट इज, then in which area we do this type of farming and what are the example of that farming. Like plantation, you can give the example is rubber, banana, tea, coffee. And in which area we are doing, it is written that in the tropical regions of the world. What is the meaning of tropical regions? Okay, just read it. What is tropical region? Tropical region, the areas which are near the tropic. Clear? That are called tropical region. So the Malaysia, rubber is in Malaysia, the coffee is in Brazil, tea is the India. We all know India is the biggest producer of tea and also the exporter, because we have large amount of tea production. That's why we also export the tea to the other countries. Clear? This is all about the commercial farming. Here some major crops are given. So to learn, तो इसमें क्या दिया हुआ है, हर क्रॉप के बारे में कि what is the suitable condition of that crop, like how much rainfall it needs, how much temperature it needs, where we produce this type of crop. Clear? So to learn this all, just make a table where you will write in first table the name of crops like rice, wheat, millets. In the second table you just write, wait, I am drawing the table, just make in your copy first crops, then the rainfall. Like if we talk about the rice, it needs high rainfall. Clear? The third is the temperature requirement. The fourth is the major producer of that crop. Okay, and the fifth column would be remarks. Like if you can add some features, some points,
So there you can write the in remarks column. Okay, I am writing in the row because there is no space, but when you will make in your copy, just these points will be in columns. Okay, there are 5 columns. Okay, this is all about the crops. Here is one case study is given in your book कि how is the farm system in India and how is the farm system in USA. आप देखेंगे कि इंडिया में जनरली फार्मिंग कौन करता है, जो पुअर होता है, जो अनएजुकेटेड होता है, वो लोग फार्मिंग करते हैं. बट इफ वी सी द केस इन USA, the people who are rich, the people who are educated are doing the farming. That's why उनका फार्मिंग सिस्टम हमसे ज़्यादा अच्छा है, उनको ज़्यादा आउटपुट मिलता है. क्लियर? You can read this farm in India and a farm in the USA. You just compare what are the points given. Just I am briefing the points. Like in India, small plot में farming किया जाता है, whereas in USA the farming land is more. हम जब irrigation करते हैं, we are using the traditional methods like drip system and all. But in USA, helicopters are using for the irrigation. So you can imagine कि how effective the agriculture there. And one more topic I left, that is agriculture development. तो हम देख रहे हैं कि इंडियन पॉपुलेशन आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो क्या आपको लगता है द प्रोडक्शन इज सफिशिएंट टू मीट द डिमांड? नो, एक्चुअली नॉट. तो वी शुड प्लान कि हाउ वी कैन डेवलप आवर एग्रीकल्चर फैसिलिटी, हाउ कैन वी increase the production of the crops and all. So we should adopt some methods, like we should use some good quality of seeds that are called high yielding seeds, so that we can get a good amount of output. We should use good fertilizers, we should get good machineries. So in this way we can increase our production capacity. So this is student, this is all about the chapter 4 agriculture. Just read this chapter. If you have any doubt, just send in the comment box. Thank you. तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन, इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, तो हमारे ऐप की लिंक नीचे दी हुई है. दैट इज लेक्सिकॉन ऐप विच इज अवेलेबल इन द प्ले स्टोर. यू जस्ट डाउनलोड दैट ऐप एंड गो टू द क्लास 8 स्टडी मटेरियल. वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स के स्टेप वाइज, क्वेश्चन वाइज सारे आंसर मिलेंगे. इसके अलावा हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अपलोड किए हैं ताकि वो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकें. सो स्टूडेंट्स, thank you.